Hello, good evening, all of you. So last time we have started with this thermal expansion, or we say thermal properties of matter. तो ये chapter हमने start किया था already. So let us continue the same today. Okay, so this is what we have seen last time. There are different types of thermal expansions. The first is the linear expansion, in which the body undergoes the change in length, basically. The second is the aerial expansion, or it is also called as a superficial expansion, which is the in which the body undergoes the change in its area. And the third one can be supposed to be the volume expansion, or it is also called as a cubical expansion, in which the body under consideration just undergoes the change in its volume. So linear expansion is significant for the bodies which have length, like rod, wire, or cylinder, and so on like that. Then again, aerial expansion is significant in case of the bodies which have area, which are flat, which are two-dimensional, like XY plane. ठीक है ना, planar bodies के बारे में ये aerial expansion valid होता है, important होता है. और जैसे कि sheet, maybe rectangular sheet और circular sheet, triangular sheet, किसी भी shape का एक two-dimensional जो area वाला sheet जो होता है, तो वो जो है उसके लिए हम एरियल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे. इवन डिस्क आल्सो इज एग्जांपल. एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ एनी बॉडी व्हिच हैज अ वॉल्यूम, ठीक है, व्हिच इज थ्री डायमेंशनल इन शेप, so which has length, breadth and height also. So in that case we can consider the cubical expansion or volume expansion. Mostly liquids and gases के केस में हम वॉल्यूम एक्सपेंशन ही कंसीडर करते हैं. The reason behind it is that the liquid has a volume, fixed volume. It doesn't have any length or area, but it has a volume fixed. And that's why cubical expansion is more significant in case of liquids and gases. But in case of solids, the linear expansion, aerial expansion, or volume expansion, all of them are significant in different situations. Let us talk about the next topic now. Yes, that is about the coefficient of linear expansion, the coefficient of aerial expansion, and coefficient of cubical expansion that we have to define now. See here, if suppose there is a rod, समझो एक rod है हमारे पास. Okay, ये rod है suppose. इसका ओरिजिनल लेंथ जो है तो वो है सपोज L0, which is at 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका लेंथ L0 है. ठीक है, बट आफ्टर हीटिंग इट, अगर उसको हमने हीटिंग चालू किया जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इट्स लेंथ ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस. जस्ट वी कैन सी इट्स लेंथ विल जस्ट इंक्रीज, and suppose that its length becomes LT finally at temperature T डिग्री सेल्सियस. तो जब उसको हमने T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया तो उसका जो लेंथ है वो T डिग्री सेल्सियस बन गया या LT बन गया. It is found from the experiments that the delta L, that means the change in length here, is actually ये जो increase in length जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डेल्टा L, that is LT minus L0. So delta L will be actually LT minus L0. That means the final length minus initial length. So it is found that delta L is actually directly proportional to the temperature, no doubt. And at the same time, delta L is also directly proportional to the original length at 0 degree Celsius. तो मतलब ये original length के साथ भी L0 delta L depend करता है, proportion में होता है. For example, if we have a wire of 10 centimeter, okay, एक 10 centimeter लंबा वायर है और एक दूसरा 100 centimeter लंबा वायर. सोचो ठीक से, अगर वो दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो अगर हम इनको हीट करेंगे, देखो इसका लेंथ 10 है, इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो अभी इसको अगर हम हीट करते हैं तो उसकी वजह से
ये सपोज मान लो 10 या उसको हम कुछ टेम्परेचर से हीट करते हैं, डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको हम हीट करते हैं, तो उसकी वजह से इसका जो लेंथ है वो अगर मान लो 1 मिलीमीटर से बढ़ जाता है, ठीक है, 1 मिलीमीटर से, तो मतलब 10 सेंटीमीटर वाले वायर का लेंथ 1 मिलीमीटर से बढ़ गया, ठीक है। तो अभी सोचो इस 100 सेंटीमीटर वाले वायर को अगर हम सेम डिग्री सेल्सियस मतलब सेम टेम्परेचर पे अगर हीट करेंगे तो उससे क्या होगा, ये भी तो इंक्रीज होगा, उसका लेंथ भी इंक्रीज होगा जरूर, but its increase in length will also be 10 times of the increase in length in this wire here. That means अगर ये 1 मिलीमीटर बढ़ता है तो जरूर यहाँ पे ये जो वायर है वो 10 मिलीमीटर बढ़ेगा जरूर। तो इसका जो इंक्रीज इन लेंथ है या इंक्रीमेंट है वो डेफिनेटली 10 मिलीमीटर होगा, क्योंकि ये इस वायर के अंदर मतलब 100 सेंटीमीटर वायर के अंदर ये ऐसे 10 सेंटीमीटर वाले 10 वायर्स यहाँ पे ऑलरेडी है, और हर एक वायर के अंदर अगर 1 मिलीमीटर का अगर एक्सपेंशन कंसिडर कर लो तो टोटल एक्सपेंशन जो है इस वायर के अंदर होने वाला वो 10 मिलीमीटर तो होना ही होना है। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि जितना बड़ा वायर तो उसमें उसका एक्सपेंशन भी ज्यादा, ठीक है, जितना वायर छोटा तो एक्सपेंशन भी ऑब्वियसली छोटा, बिल्कुल। तो इसलिए ये होता है कि एक्सपेंशन डजंट डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर but it also depends on the original length of the wire initially at 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का लेंथ और टेम्परेचर, इन दोनों चीजों के ऊपर ये डेल्टा एल डिपेंड करता है, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा एल actually depends on the product of these two. So we can just get this L naught into T replaced here. And then in the next step, we can just get this as delta L is equal to some constant. Now this constant is denoted by alpha. Okay, अब ये याद रखो ठीक से, ये जो है this is alpha, not proportionality sign. Even if it looks same as this proportionality sign, but these two are not same actually. This is your alpha proportionality sign, but this one here is actually alpha, which is a constant of proportionality into L naught into T kept as it is, and hence we can just get that this delta L is actually going to be equal to alpha into L naught into T. In fact, we should say actually delta T. Why? Because अभी अगर इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर अगर T डिग्री सेल्सियस है, तो फिर उस केस में डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, तो change in temperature will be final temperature minus 0 डिग्री Celsius initial temperature. So that will be actually T only. In this case, when the initial temperature is 0, the delta T is going to be same as T only. But in case when the initial temperature is not 0, so in that case, this delta T will actually be equal to T2 minus T1, where T2 is going to be the final temperature and T1 is going to be actually the initial temperature in this way. So that we can just get that this delta L is actually equal to alpha into L naught into delta T as a equation or relationship between the length, change in length and change in temperature. Even we can just express this equation in terms of यहाँ पे delta L जो है इसको हम लिख सकते हैं आराम से, because we already have seen that this LT minus L naught, right? So we can just get that this equation can actually be modified as L2 minus LT minus L naught, where L naught is the length at 0 डिग्री Celsius, which will actually be equal to alpha into L naught into T, करेक्ट है। तो ये इक्वेशन हम इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं आराम से, और उससे भी आगे जाके अभी अगर इस L naught को अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखो ठीक से। Yes, if we just simplify this further, then we can just get that LT, that is the length at high temperature, temperature T, is actually equal to L naught plus L naught alpha into L naught into T, correct है? तो ये alpha L naught T kept as it is. Even we can just take this L naught common from this and try to get this as, तो इसको more simplify कर सकते हैं और लिख सकते हैं LT will actually be equal to L naught common
and here it will be 1 plus alpha T as in the bracket. So this will be actually the relationship between the length at high temperature T and the length at 0 degrees Celsius L naught in this way here. So this relationship will give us the expression for the length at high temperature in terms of the length at 0 degrees Celsius. If we know the length at 0 degrees Celsius, then we can just calculate the length at high temperature T at any temperature T which is required. And this equation can also be transmitted in this way. तो इस equation को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं. In this case, this delta L actually will be denoted by L2 minus L1. समझा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो डेल्टा L है और ये डेल्टा T है. डेल्टा T मतलब यहाँ पे T2 minus T1 इसको हम बोल सकते हैं. T2 minus T1 because initial temperature need not to be 0 degrees Celsius here in this case. So here we can just get that this L2 minus L1 is equal to alpha into L1 into delta T, where delta T is again T2 minus T1. That's it. So this is again another formula for finding this L2 minus L1. And even we can just express this L2 minus L1 and take this L1 in that side so as to get this as L2 is equal to L1 plus alpha L1 into T2 minus T1, so that we can still get this L1 common here also. तो यहाँ पे भी हम L1 common निकाल सकते हैं और हमको मिल सकता है L2 is equal to L1 into bracket 1 plus alpha into T2 minus T1. And no doubt T2 minus T1 can be replaced by delta T at any time, no doubt. So therefore we can just get this as a relationship between the two lengths at two different temperatures. L1 is the length at T1 temperature and L2 is the length at temperature T2 in this way. So this is actually the mathematical analysis. और even इससे हमको और एक बात पता चलती है, ये वाला जो इक्वेशन है इससे हमको और एक इक्वेशन मिलता है अल्फा is actually going to be equal to, क्योंकि अब यहाँ पे देखो ये जो अल्फा है वो अगर हमको निकालना है तो उसके साथ जो L0 और T है इनको हमको नीचे भेजना पड़ेगा उस तरफ, जिससे वो अल्फा का वैल्यू हमको मिल जाएगा आराम से. दैट अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L0 into T. और फ्रॉम दिस फॉर्मूला ऑल्सो, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, इस फॉर्मूला को भी अगर यूज करेंगे तो हमको अल्फा कितना मिलेगा, देखो ठीक से, अल्फा कैन बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू, तो यहाँ पे ये जो अल्फा के साथ में जो ये है पूरा L1 into T2 minus T1, that should be transferred in the denominator in the other side, so as to get this as alpha is equal to L2 minus L1 upon L1 into T2 minus T1, which can also be written as, तो इस L2 minus L1 को हम simply लिख सकते हैं delta L, right? So we can call it as delta L, and here L into delta T here. So this is actually the value of alpha, we can just say. So alpha is called as the temperature coefficient of linear expansion. Remember, temperature coefficient of linear expansion. Yes, so temperature coefficient of linear expansion, which is actually defined as the change in length per unit original length at 0 degree Celsius per unit degree rise in temperature. Okay, क्या किया हमने, देखो change in length per unit मतलब upon ना, तो per unit original length at 0 degree Celsius per unit degree rise in temperature, तो मतलब rise in temperature यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, so this is the formula for alpha in words, you can say. Temperature coefficient of linear expansion can actually be defined as the change in length per unit original length at 0 degree Celsius per unit degree rise in temperature in this way. So this is actually going to be the expression for alpha, remember. Okay, any doubt about this? यहाँ तक जो हमने किया है उसके बारे में कुछ डाउट है आपको? See here, this alpha is actually going to be very small. ठीक है ना, बहुत छोटा होता है ये अल्फा,
जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल अगर ले लेंगे तो उससे तुमको ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ स्मॉल दिस अल्फा इज एक्चुअली. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल इन द नेक्स्ट स्क्रीन. ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास है कि एक रेलवे ट्रैक सपोज है. द लेंथ ऑफ अ रेलवे ट्रैक ठीक है, लेंथ ऑफ वन रेलवे ट्रैक वी कैन से. ठीक है, मतलब जो एक रेल रेल होता है नहीं, वो जहाँ जहाँ पे खत्म होता है और दूसरा रेल चालू होता है, और दो रेल्स के बीच में मैंने कल बताया था ना कि गैप होता है छोटा. तो सपोज दैट वन लेंथ ऑफ वन रेलवे ट्रैक इज सपोज almost 25 meter. Okay, and suppose that 25 meter है, and suppose that the gap between them gap between two rails is about 2.5 सेंटीमीटर. ओके, सोचो ठीक से, 2.5 सेंटीमीटर मतलब इतना छोटा गैप उनके बीच में है. सोचो. So in this case, what is the linear expansion, coefficient of linear expansion? Find alpha. ठीक है, just for saving the time, will not write its full name. वैसे हमको पता है full name of alpha is temperature coefficient of linear expansion. Okay, ये पूरा है. But we have to find out this temperature coefficient of linear expansion of जो आयरन या जिस मटेरियल से ये रेल ट्रैक बने हुए हैं उसका हमको अल्फा ढूंढ के निकालना है. हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? सो हियर वी कैन जस्ट गेट दिस एज अल्फा. एक्चुअली हमारा फॉर्मूला क्या है हमको पता है ऑलरेडी. अल्फा इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल into delta t. Okay, delta t has also to be given. Okay, rise in temperature, maximum rise in temperature is suppose 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस राइज. हाँ, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है लेंथ तो वो, और जो 60 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर पे जो रहेगा, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है एक्चुअली 60 डिग्री सेल्सियस. अब ये जो टेम्परेचर में जो राइज है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ सन के धूप की वजह से ही होने वाला है, बट इट विल बी ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑल्सो. तो फ्रिक्शन की वजह से भी वो रहने वाला है. ठीक है, तो दिस इज द राइज इन टेम्परेचर डायरेक्टली गिवन हियर. तो initial temperature, final temperature is not given at all, but just rising temperature directly is given. So we can just use it as delta T here in this case. Okay, and delta L here is given to be 2.5 centimeter. Okay, ये 2.5 centimeter and L is actually 25 meter. So अभी यहाँ पे सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा जरूर. So 2.5 centimeter. Centimeter can be written as 2.5 into 10 raised to minus 2 मीटर. करेक्ट है, तो ये बन गया मीटर में. और ये 25 मीटर ये तो ऑलरेडी मीटर में ही है यहाँ पे, तो इसलिए वो 25 एज इट इज हम डाल देंगे इसको. और उसके अलावा ये जो राइज इन टेम्परेचर है, जस्ट टेक दिस राइज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ बीइंग एट 60. कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं. तो ये सपोज 50 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे. ठीक है, तो दिस इज योर 50 डिग्री सेल्सियस rise in temperature. So this calculation we have to work it out. Okay, so from this we can just get the expression or value of alpha. तो यहाँ पे देखो, लिख ये 2.5 और ये जो 25 है ये कैंसिल करके हमको यहाँ पे मिलेगा 2.5 1 जा 2.5 10 जा. and if you just take this 10 and this 10 also तो 100. so 100 और ये 100 मतलब 10 raised to 2 हो गया, और वो ऊपर जाके 10 raised to minus 2 बनेगा. So we can finally get it as 1 by 5 into 10 raised to minus 4. Are you getting this? And 1 by 5 can be written as 0.2 actually. Correct? Hai? So here it will be 0.2 into 10 raised to minus 4, which can also be written as, अभी इस 0.2 को ही हम 2 into 10 raised to minus 1 लिख सकते हैं. Correct है? तो अगर इस 0.2 को 2 into 10 raised to minus 10 लिख दिया
तो ये 10⁻⁻10 और ये 10⁻⁴ मिलके ऑलमोस्ट 2 × 10⁻⁻5 तो बन ही जाएगा। तो सोचो अल्फा का वैल्यू जो है इतना छोटा होता है, जो 2 × 10⁻⁻5, मतलब उसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहे तो उसको हमको ऐसा लिखना पड़ेगा 0.0000 एंड देन 2। समझा ठीक से? क्योंकि 5 डिजिट हमको पीछे लेके जाना है ना पॉइंट। तो इतना छोटा वैल्यू अल्फा का है, तो वो तो निग्लिजिबल है, बहुत छोटा है वो। ठीक है, तो छोटे बड़े टेम्परेचर से उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितना भी फर्क पड़ता है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हम उसको पढ़ते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटा छोटे छोटे वैल्यूज है, या छोटा इतना 2-2.5 सेंटीमीटर मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान होने वाला है वो बहुत बड़ा है। जैसा कि हम कल भी बताया था कि अगर हमने ये निग्लेक्ट कर दिया तो एक्चुअली जो रेल ट्रैक्स है वो बेंड हो जाएंगे, और उसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्चुअली भले वो छोटा है फिर भी हमको वो पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। ओके, इसमें किसी को ये डाउट है कि हमने यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर पूरा ले लिया, जबकि दो ट्रैक्स के बीच में जो गैप है वो एक्चुअली 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लो सपोज ये एक ट्रैक है, देखो ठीक से, ये सपोज एक ट्रैक, ये 25 सेंटीमीटर लंबा है, फिर उसके बाद ये दूसरा ट्रैक, ये फिर तीसरा, ये फिर चौथा उसके बाद। तो ऐसे एक के बाद एक इस तरह से ट्रैक रखे होंगे, और उनके बीच में जो गैप है वो हमको दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो गैप है ये एक्चुअली 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर। और जो टोटल लेंथ जो है इस पूरे का, तो वो 25 सेंटीमीटर है, सॉरी 25 मीटर है, राइट। तो इवन यहाँ पे भी इसका भी 25 मीटर लेंथ होगा, और ये जो गैप है तो वो गैप एक्चुअली 2.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। तो अभी इसमें सवाल ये है कि देखो ठीक से, एक एक रॉड के अंदर या एक ट्रैक के अंदर जो भी लेंथ चेंज होगा, जो भी इंक्रीमेंट होगा लेंथ का, क्या वो 2.5 होगा या 2.5 का आधा होगा? व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द रॉड? वन वन इसका ओरिजिनल लेंथ तो हमको पता है ऑलरेडी 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर है, नो डाउट। बट व्हेन इट्स लेंथ विल जस्ट एक्सपांड, तो जब वो मैक्सिमम टेम्परेचर जब 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, सो उसका टेम्परेचर जब 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, तो उस समय उसका लेंथ कितना बनेगा? तो देखो उसका जो एक्सपांशन है वो इधर से भी होगा और इवन इधर से भी होगा, करेक्ट है? ये समझ सकते हो ठीक से, दोनों तरफ से उसका एक्सपेंशन होने वाला है। और ये गैप जो है वो गैप इतना रखा हुआ है जो दोनों तरफ से दोनों का एक्सपेंशन आधा आधा मिलके भी वो टच न करे। तो इसका मतलब उतना ही एक्सपेंशन इस दूसरे वाले रॉड का भी होने वाला है। ये देखो इसका भी रॉड, इसका भी एक्सपेंशन इस तरफ होगा उतना ही, और इवन यहाँ पे भी उतना ही एक्सपेंशन इसका भी होने वाला है। तो इसलिए अगर हम देखते ठीक से, तो दोनों का एक्सपेंशन मिला के अगर ये 2.5 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आधा एक्सपेंशन इस रॉड का इधर होने वाला है, और उस आधा एक्सपेंशन इधर से होने वाला है। तो इसलिए ये आधा और इधर का आधा, वो दोनों अगर ऐड करेंगे तो फिर से हमको 2.5 मिलने वाला है। समझा ठीक से? तो इसलिए जितना गैप रहेगा उतना ही हर एक के अंदर एक्सपेंशन रहने वाला है। बिल्कुल। तो इसलिए गैप उतना ही रखा जाता है जितना एक रॉड के अंदर मैक्सिमम एक्सपेंशन हो सकता है। तो इसलिए ये डेल्टा एल का जो वैल्यू है, so this value of delta L here is actually going to be same as the gap. Okay, जितना गैप होगा उतना ही डेल्टा एल रहने वाला। तो उससे इससे हमने यहाँ पे उस आयरन मटेरियल का अल्फा निकाल के दिखाया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑब्टेन टू बी 2 × 10⁻⁵। अभी इसका यूनिट अगर देखेंगे ठीक से, तो देखो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी है ना उसका फॉर्मूला। तो उसका यूनिट कैसे निकालेंगे? डेल्टा एल का यूनिट क्या है? मीटर, नो डाउट। देन एल इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर, एंड अगेन डेल्टा टी दैट इज टेम्परेचर इज एक्चुअली मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अब यहाँ पे जब मीटर ये यूनिट जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मीटर जो है वो मीटर तो कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, और बाकी क्या बचेगा यहाँ पे? डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो भी डिनोमिनेटर में है, तो उसको हम रेज टू -1 लिख सकते हैं आराम से।
-1 रेज टू -1 और उसको हम पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस करेक्टली, पर डिग्री सेल्सियस, ओके। और ऑल्सो वी कैन जस्ट सिंपली से एज पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पे कोई भी चलेगा, तो दिस विल बी पर डिग्री सेल्सियस इन दिस वे। तो वो उसका यूनिट ही है, ठीक है। अल्फा इज ऑलवेज मेजर्ड इन पर डिग्री सेल्सियस, तो उसको चाहे ऐसा लिखो या चाहे ऐसा ऐसा लिखो या उसको ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दीज थ्री मेथड्स आर जस्ट वैलिड, नो डाउट। Okay, so this is all about the value of alpha. Even if you just know the value of alpha, then we can find out the length of any rod at any high temperature if we know the length at low temperature. For example, see, suppose दूसरा एक example हम यहाँ पे करेंगे. Suppose the length of a rod is suppose 100 centimeter at 0 degree Celsius. Okay, so find its length at suppose 150 degree Celsius. Okay, ये क्वेश्चन है और अल्फा का जो वैल्यू है उस मटेरियल का वो दिया हुआ है ऑलरेडी. इट इज गोइंग टू बी सपोज 1.2 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. Okay, obviously it will be in the range of 10 raised to minus 5, just we have already seen here this way. Only the thing is that this was 2 into 10 raised to minus 5. Here it is going to be 1.2 into 10 raised to minus 5. Okay, so how can we get the length of the rod at 100 degrees at 150 degrees Celsius if its length at 0 degrees Celsius is given to be 100 centimeter here? So we can just make use of this formula. L is equal to L naught into 1 plus alpha T. Okay, where L is the length at, or we can just call it as LT here, which is the length at T degrees Celsius temperature, and L naught is going to be 100. Don't worry, this 100 will be in centimeter. So because of that, this LT will also come into centimeter only. Okay, so here it is 1 plus alpha, which is actually 1.2 into 10 raised to minus 5, and that is to be multiplied with the temperature, which is actually 150 here. So this is 150 put here, and if we just solve this further, then we can just get this as LT is equal to 100 kept as it is, and here it is going to be 1 plus, अच्छा नहीं तो ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर देंगे, better. Yes, so 100 into 1 becomes 100 plus, here it will be 100 into 1.2 into 10 raised to minus 5, and that is multiplied by 150 actually. Okay, so इसको अगर हम वर्कआउट करेंगे पूरा, yes, someone has given the answer. Yes, very good, Kashish. 1.0018 meter. Meter. So if we want to find it out in centimeter, it will be 100.18 centimeter. Correct. Very good. So we can just find it out. So here it will be 100 kept as it is, plus here it will be 100 into 10 raised to minus 5 will actually become 10 raised to minus 3 here, and 1.2 and 150 can be multiplied together. ये जीरो जो है वो इस 1.2 का डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट करने के लिए यूज कर देंगे, तो हमको सिर्फ 12 और 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमको 180 मिल जाएगा. करेक्ट है, 180. सो here we can just get this 180 into 10 raised to minus 3, so that we can just get this in the next step, that 100 plus 0.18. so सोचो यहाँ पे, this is in centimeter and this is also in centimeter actually. तो 100 centimeter तो उसका ओरिजिनल लेंथ था, no doubt, but after raising it by temperature 150 degrees Celsius, its length increases only by 0.18 centimeter. मतलब almost 0.2 centimeter हो गया लेंथ. चेंज इन लेंथ जो है वो उसका 0.2 सेंटीमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 2 मिलीमीटर के बराबर हो गया. अभी सोचो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ाने के बाद भी अगर उसका लेंथ सिर्फ 2 मिलीमीटर से बढ़ रहा है, तो वो तो बहुत छोटा हो गया, मतलब इट्स नेग्लिजिबली स्मॉल. But still, as I have just told just now, that we will have to study it just for the
So we'll have to study it क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भले वो छोटा है फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर 100 सेंटीमीटर लंबा वायर का टेम्परेचर अगर हम 150 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ा देते हैं तो उसका जो लेंथ है वो सिर्फ 2 मिलीमीटर से बढ़ता है। वो 2 मिलीमीटर बहुत छोटा है उसके लेंथ के कंपैरिजन में, 100 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। नाउ विल जस्ट go to the next concept, that is about the temperature coefficient of superficial expansion or aerial expansion, we can say. If we have a plate, rectangular plate of area A naught, okay, and its area A naught, and this is the area at 0 degree Celsius actually. But when we start heating it, तो इसको जब हम हीटिंग स्टार्ट करते हैं तो सपोज हीटिंग की वजह से उसका एरिया थोड़ा बढ़ता है, और मान लो कि उसका एरिया जो है वो T डिग्री सेल्सियस पे उसका एरिया AT बन जाता है, ठीक है। AT is going to be the area of this plate at T degree Celsius. So what we can say is it's observed from the experiments that the change in area, that means is delta A here, we can say. So delta A is directly proportional to A naught itself, and at the same time this delta A is also directly proportional to the increase in temperature here. So that we can just get that this delta A, that is a change in area here, is directly proportional to A naught into T. तो A naught के साथ भी और T के साथ भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से उनके प्रोडक्ट पे वो डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। So because of this we can just get in the next step that this delta A has to be equal to some constant into A naught into T, but that constant is not beta in this case now. It is actually denoted by alpha in this case now. It will be denoted by beta here in this case. तो जो constant है तो उसको हम अभी beta से denote करेंगे, and here we can get this equation, that is delta A is equal to beta into A naught into T here. So we can just express this delta A as simply AT minus A naught at any time and get this as beta A naught T as it is. And if you want to express this AT in terms of A naught, then we can just take this A naught in that side so as to get this as AT is equal to A naught plus beta into A naught into T here. So that if we just take this A naught common, then we can be able to get this AT to be simply equal to A naught in bracket 1 plus beta into T simply. So this is actually going to be the formula for finding the area of a linear planar body at any high temperature if we know the area at 0 degree Celsius. तो अगर किसी बॉडी का एरिया 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको पता है तो उसका एरिया हम हाई टेम्परेचर पे T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आराम से निकाल सकते हैं। और इसमें से इस फॉर्मूला से हमको और एक इक्वेशन मिलता है। अगर सपोज ये इनिशियल टेम्परेचर जो है वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस ना होके अगर उसके बदले वो T1 डिग्री सेल्सियस है, T1 is the initial temperature at which the area of this plate is suppose A1, and suppose that it is heated up to the temperature T2, ठीक है, इस T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने उसको हीट किया and its area actually becomes A2. In that case also we can just get that this delta A is proportional to, one thing is that A1, and it is also proportional to delta T here, and hence we can just get this delta A, that is change in area, will be actually equal to some constant, that is beta again into area A1 into delta T. So we can just get this equation for any two areas at any two different temperatures. So from this also we can just get here this A2 minus A1, क्योंकि कोई भी दो टेम्परेचर्स पे अगर हमको एरियाज पता है तो उसको हम A2 minus A1 बोल देंगे, और it will be equal to beta into A1 into delta T here, so that in the next step we can just get this A2 is equal to A1 is shifted in that side, so that we can get this as A1 plus beta A1 delta T here. And if we just take this
A1 common, then we can be able to get this A2 is equal to A1 in the bracket 1 plus beta into delta T. Okay. So beta into delta T. So this will be actually the expression for finding the area at any high temperature if the area at any other temperature is given. Okay, and from this equation here, ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास है, तो इससे हमको और एक फॉर्मूला मिलता है जो कि बीटा का. तो बीटा can be written to be simply equal to what? So beta will be equal to delta A. That means the change in area upon original area into change in temperature. That's it. So we can just define it in words as that this beta is actually called as the temperature coefficient of areal expansion, or we can just call it as temperature coefficient of superficial expansion, which is defined as the change in area per unit original area per unit degree rise in temperature. So we can just get this as rise in temperature simply. So in this way, this is the definition in words, you can say. And as usual, beta is also measured in the same units, that is per degree Celsius, no doubt. तो उसका जो यूनिट है तो वो भी पर डिग्री सेल्सियस ही होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, इस एरिया का भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड and we'll be left with simply the unit of temperature only in the denominator. So therefore, we can just get this as per degree Celsius, or per degree Celsius we can write it like this, or simply degree Celsius raised to -1, no doubt, or Kelvin raised to -1 also, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन होता है, ठीक है. Yes, then again we can just say this beta can also be expressed as, if you just express this delta A as A2 minus A1, and then it will be divided by A1 into delta T can also be expressed as T2 minus T1, where T1 is the initial temperature and T2 is the final temperature, and A1 is the area at temperature T1 and A2 is the area at temperature T2, like this. So, and even we can just express this beta in the other form. If the initial temperature is going to be 0, तो इस केस में हमको यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, इसमें a नॉट t को अगर नीचे लेके जाएंगे वो साइड में डिनोमिनेटर में, तो उससे हमको मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू at माइनस a नॉट अपॉन a नॉट इंटू t. देखो यहाँ पे t2 माइनस t1 नहीं आया क्योंकि यहाँ पे t1 0 है. देखो यहाँ पे भी अगर हमने t1 के बदले 0 डाल दिया और t2 के बदले अगर सिंपली t डाल दिया और a1 के बदले अगर a नॉट डाल दिया, तो यही इक्वेशन हमको मिलने वाला है फिर से. तो इसलिए दिस इज द इक्वेशन फॉर बीटा. नो डाउट ऑल दीज इक्वेशंस आर जस्ट सेम फॉर्म, सेम मॉडिफिकेशंस ओनली, ठीक है ना. मॉडिफिकेशंस ही है वो, एक ही बेसिक फॉर्मूले के मॉडिफिकेशंस है. जैसे ये अगर एक सिंगल इक्वेशन अगर तुम याद रख लो तो उससे ही तुमको ये भी मिल जाएगा आराम से, just because a delta A can be replaced by A2 minus A1 and this delta T can be replaced by T2 minus T1, no doubt. So उससे तुमको ये इक्वेशन मिल जाएगा. और अगर इसमें T1 का जो वैल्यू है वो अगर 0 डाल देंगे तो T2 minus T1 will be replaced by T only and A1 के बदले यहाँ पे A नॉट डालना पड़ेगा तुमको. तो इससे ये वाला इक्वेशन भी मिल जाएगा आराम से, ठीक है. तो इस तरह से दिस इज द ऑल अबाउट एरिया, ठीक है. दैट इज द temperature coefficient of areal expansion. We can just do the similar sums in this case also. इसमें भी हम सेम वैसे ही सम्स कर सकते हैं, सिर्फ वहां पे लेंथ के बदले यहाँ पे हमको क्या डालना पड़ेगा, एरिया डालना पड़ेगा, बस खत्म. एंड थर्ड वन इज द coefficient of cubical expansion. You can say if suppose we have a cube like this, ओके ये सपोज क्यूब है जिसका वॉल्यूम V नॉट है at 0 degree Celsius suppose, but when we heat it, it just expands and its volume just increases
and suppose it becomes Vt after heating it. समझो उसको हमने हीट किया और हीट करने के बाद उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया और उसका वॉल्यूम बन गया Vt, ठीक है, at T degree Celsius temperature. Then it is already observed that the change in volume in this case here will actually be proportional to two things. One is V naught, that is original volume at 0 degree Celsius, and at the same time it is proportional to temperature also, no doubt. But the constant of proportionality in this case here is actually going to be gamma. We can denote it by gamma, which is actually called as the temperature coefficient of cubical expansion, remember, and that is multiplied with V naught into T kept as it is, जिसमें से हमको इस डेल्टा V को अगर हमने V माइनस V naught एक्सप्रेस कर दिया तो हमको मिलेगा गैमा इंटू वी नॉट इंटू टी, इस तरह से यहाँ पे, और इस वी नॉट को अगर इस तरफ ले लिया तो फिर हमको मिलेगा V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू सॉरी वी नॉट प्लस गैमा इंटू वी नॉट इंटू टी. So that if we just take this V naught common, then we can just get the volume at T degree Celsius to be simply equal to V naught, which is can be taken common, into 1 plus gamma into T here, simply. So this is also the similar equation obtained here, okay, which can be written as, तो अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस था और ओरिजिनल जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो V नॉट था, इसलिए हमने यहाँ पे ये इस तरह से एक्सप्रेस किया. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई भी दो टेम्परेचर अगर हम सिलेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल T1 एंड T2 सपोज, और T1 पे जो वॉल्यूम है वो है सपोज V1 और T2 टेम्परेचर पे जो बॉडी का वॉल्यूम है वो है सपोज V2. So we have found that the delta V, that means the change in volume, is not only proportional to the temperature, but also it is proportional to the original volume at means original volume, initial volume here. So therefore delta V will be proportional to V1 as well as T here. तो यहाँ पे क्या हो गया, V नॉट जो था यहाँ पे का वो यहाँ पे V1 से रिप्लेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो T था वो डेल्टा T से रिप्लेस होने वाला है, तो V1 into delta T we can write, correct है, and then we can just get that this delta V is proportional to V1 as well as delta T. So combining these two, we can just get that this delta V is actually going to be equal to gamma, that is the again the same constant of proportionality, that is the temperature coefficient of cubical expansion into V1 into delta T as it is. So from this we can just get this V2 minus V1 to be simply equal to gamma into V1 into delta T. So that V2 can actually be written to be simply equal to V1 plus gamma V1 delta T, and then V2 can be expressed as V1 can be taken common, and we'll be left with 1 plus gamma into delta T in the bracket. So this is the expression for finding the volume at any high temperature if we know the temperature difference and gamma and the volume at initial temperature. Okay, तो इस तरह से, और इसमें से ही हमको gamma के भी फॉर्मूले मिलते हैं. तो gamma का फॉर्मूला क्या होगा, देखो सबसे बेसिक फॉर्मूला इसमें से हमको मिल जाएगा, gamma can be written to be simply equal to delta V upon V1 into delta T, correct है, which can be written as in words the change in volume per unit original volume per unit degree rise in temperature, correct है, so rise in temperature will be there, yes, and we can also express it in terms of V1 and V2 as V2 minus V1 upon V1 into T2 minus T1, okay, and we can also express it in terms of Vt and V naught. So V2 can be replaced by Vt minus V1 can be replaced by V naught, again V1 can be replaced by V naught, and T2 minus T1 can be replaced simply by T, because initial temperature is going to be 0 degree Celsius here. So ये भी सारे gamma के फॉर्मूले जो है वो हमको याद रखने हैं ठीक से. So these are the expressions for gamma, and gamma is called as
temperature coefficient of cubical expansion, remember. Yes, so we can अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है तो वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं, जिसमें सपोज फॉर एग्जांपल the volume of mercury at 0 degree Celsius is suppose 50 cc. Okay, cc matlab centimeter cube. Okay, so what will be its volume at 450 degrees Celsius? Can you find out? और let us take it as 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम जो है वो 50 सीसी है, तो उसका वॉल्यूम 450 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है, और उसके लिए हमको अल्फा गैमा का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, गैमा इज ऑलरेडी गिवन टू बी फॉर मर्क्यूरी. ऑब्वियसली मर्क्यूरी का गैमा, yes, suppose it is 5 into 10 raised to minus 4 per degree Celsius. Yes, who can do this? Just try it yourself and put it in the chat box. Volume of mercury at 50 degrees Celsius is going to be 50 cc. cc matlab cubic centimeter or centimeter cube, we can say. What will be its volume at 450 degrees Celsius? That is to be found out. Yes. 60 cc. Very good. See here, we have to use this formula. अभी इसमें देखो इतने सारे फॉर्मूलेज में से हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है. देखो हमको एक तो फाइनल वॉल्यूम निकालना है. ओके, और इनिशियल वॉल्यूम जो है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो 50 डिग्री सेल्सियस है. जो दो टेम्परेचर हमको दिए हैं तो वो इसको एक को हमको T1 मानना होगा और दूसरे वाले को हमको T2 मानना होगा. और जो जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम दिया है उस वॉल्यूम को हमको V1 बोलना है, और दूसरा जो वॉल्यूम हमको निकालना है तो उसको हमको V2 बोलना होगा. तो V1 V2 T1 T2 वाला कौन सा फॉर्मूला है? यही हमारे पास फॉर्मूला है, जो V2 is equal to V1 in bracket 1 plus gamma into delta T. ओके, तो ये हमको यूज करना है जिसमें हमको V2 मिलने वाला है. बट V1 कितना है देखो, तो जस्ट रिप्लेस दिस V1 by 50 cc as it is and 1 plus gamma. अभी gamma is already given here, that is 5 into 10 raised to minus 4. So 5 into 10 raised to minus 4, and that is to be multiplied with delta T, where delta T is nothing but the change in temperature. अभी delta T या तो separate निकालो या तो यहाँ पे ही निकाल दो. That is 450 minus 50. Don't forget to subtract this 50 from 450 here, because initial temperature is not 0 here. So therefore, if we just work this out, then V2 can be written to be simply 50 into 1 plus, here it is 5 into 10 raised to minus 4 into 450 minus 50, which comes out to be 400 actually. So that we can just get multiply this 5 and 400 together, so that we can just get it as 5 4s are 20, right? So it will become 2000 actually. So we can just get this V2 is equal to 50 into 1 plus यहाँ पे 2000 into 10 raised to minus 4 रहने वाला है. So what is 2000 into 10 raised to minus 4? So 10 raised to minus 4 की वजह से क्या होगा, ये पॉइंट जो है वो 4 डिजिट्स पीछे शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ से 1 2 3 4 मतलब वो 0.2 बन जाएगा. So we can just get this as 1 plus 0.2 finally, which actually happens to be 1.2, right? So if we just have this 50 multiplied with 1.2 here, then we can just be able to get this 5 into 12, that is 60 finally. So 60 cc, this will be the volume of this mercury at 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अभी देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए ये वॉल्यूम चेंज हमको बहुत ही सिग्निफिकेंट मिला. और वैसे भी मर्क्यूरी का होता ही है, मर्क्यूरी का एक्चुअली गैमा का वैल्यू ज्यादा होता है, इसीलिए हम उसको एक्चुअली थर्मोमीटर के अंदर यूज करते हैं.
एंड मर्क्यूरी का जो और वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। और ये भी और एक रीजन है मर्क्यूरी को थर्मोमीटर के अंदर यूज करने का। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में काफी कुछ हमने आज के लेक्चर में किया है, वो जस्ट रिवाइज करके रखो। ठीक है, ये डेरिवेशंस जो सारे हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस करो घर पे। ठीक है, एक बार लिख के देखो वापस खुद से, एंड देन वी कैन जस्ट गो टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो अगले लेक्चर में हम अल्फा, बीटा और गैमा, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एक्चुअली अल्फा बीटा हैपन्स टू बी डबल ऑफ अल्फा, इट कैन बी प्रूव्ड, वो हमको कल के लेक्चर में प्रूव भी करना है। एंड गैमा एक्चुअली हैपन्स टू बी ट्रिपल ऑफ अल्फा। तो बीटा एंड अल्फा गैमा, both of these just depend on alpha. If we know alpha, we can easily find out beta as well as gamma for any material. किसी भी एक फिक्स मटेरियल के लिए हम अगर एक भी तुमको मिल गया, अल्फा मिल गया, तो बीटा गैमा तुम निकाल सकते हो आराम से। बीटा मिल गया तो गैमा अल्फा निकाल सकते हो बिल्कुल, या गैमा में दिया गया तो अल्फा बीटा निकाल सकते हो बिल्कुल। तो ये तीनों जो कॉन्स्टेंट्स है वो तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है तो वो हमको नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में इन्वेस्टिगेट करना है। ओके, सो लेट अस स्टॉप लेक्चर हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।